श्री गणेशाय नमः। अथ श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। श्री पार्वत्युवाच नाम्नां सहस्रमं परमं छिन्नमस्ता प्रियं शुभं कथितं भवता शम्भो सद्यः शत्रुनिकृन्तनं पुनः पृच्छाम्यहं देव कृपां कुरु ममोपरि सहस्रनाम पाठे च अशक्तो यः पुमान् भवेत् तेन किं पठ्यते नाथ तन्मे ब्रूहि कृपामय। श्री सदाशिव उवाच अष्टोत्तरशतं नाम्नां पठ्यते तेन सर्वदा सहस्रनाम पाठस्य फलं प्राप्नोति निश्चितम्। ॐ अस्य श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री छिन्नमस्ता देवता मम सकल सिद्धि प्राप्तये जपे विनियोगः। ॐ छिन्नमस्ता महाविद्या महाभीमा महोदरी चण्डेश्वरी चण्डमाता चण्डमुण्डप्रभञ्जिनी महाचण्डा चण्डरूपा चण्डिका चण्डखण्डिनी क्रोधिनी क्रोधजननी क्रोधरूपा कुहूकला कोपातुरा कोपयुता कोपसंहारकारिणी वज्रवैरोचनी वज्रा वज्रकल्पा च डाकिनी डाकिनी कर्म निरता डाकिनी कर्म पूजिता डाकिनी संग निरता डाकिनी प्रेम पूरिता खटवांगधारिणी खरवा खड्ग खप्पर धारिणी प्रेतासना प्रेतयुता प्रेतसंग विहारिणी छिन्नमुण्डधरा छिन्न चण्डविद्या च चित्रिणी घोररूपा घोरदृष्टिर् घोररावाघनोवरी योगिनी योगनिरता जपयज्ञपरायणा योनिचक्रमयी योनिर् योनिचक्रप्रवर्तिनी योनिमुद्रा योनिगम्या योनियन्त्रनिवासिनी यन्त्ररूपा यन्त्रमयी यन्त्रेशी यन्त्रपूजिता कीर्त्या कपार्दिनी काली कंकाली कलकारिणी आरक्ता रक्तनयना रक्तपानपरायणा भवानी भूतिदा भूतिर् भूतिदात्री च भैरवी भैरवाचार निरता भूतभैरवसेविता भीमा भीमेश्वरी देवी भीमनादपरायणा भवाराध्या भवनुता भवसागरतारिणी भद्रकाली भद्रतनुर् भद्ररूपा च भद्रिका भद्ररूपा महाभद्रा सुभद्रा भद्रपालिनी सुभव्या भव्यवदना सुमुखी सिद्धसेविता सिद्धिदा सिद्धिनिवहा सिद्धा सिद्धनिसेविता शुभदा शुभगा शुद्धा शुद्धसत्त्वा शुभावहा श्रेष्ठा दृष्टिमयी देवी दृष्टिसंहारकारिणी सर्वाणी सर्वगा सर्वा सर्वमंगलकारिणी शिवा शांता शांतिरूपा मृडानी मदनातुरा इति ते कथितं देवी स्तोत्रं परमदुर्लभं गुह्याद् गुह्यतरं गोप्यं गोपनीयं प्रयत्नतः किमत्र बहुनोक्तेन त्वदग्रं प्राणवल्लभे मारणं मोहनं देवी ह्युच्चाटनमतः परं स्तम्भनादिककर्माणि रिद्धयः सिद्धयोऽपि च त्रिकालपठनादस्य सर्वे सिद्ध्यन्त्यसंशयः महोत्तमं स्तोत्रमिदं वरानने मयेरितं नित्यमनन्यबुद्धयः पठन्ति ये भक्तियुता नरोत्तमा भवेन्न तेषां रिपुभिः पराजयः। अथ श्री छिन्नमस्ता कवचम्। देव्युवाच कथिताश्छिन्नमस्ताया या विद्यासु गोपिताः त्वया नाथेन जीवेश श्रुताश्चाधिगता मया इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं सर्वसूचितं त्रैलोक्यविजयं नाम कृपया कथ्यतां प्रभो। भैरव उवाच शृणु वक्ष्यामि देवेशि सर्वदेव नमस्कृते त्रैलोक्यविजयं नाम
कवचं सर्वमोहनं सर्वविद्यामयं साक्षात् सुरात् सुरजयप्रदं धारणात् पठनात् त्रैलोक्यविजयी विभुः ब्रह्मा नारायणो रुद्रो धारणात् पठनाद्यतः कर्ता पाता च संहर्ता भुवनानां सुरेश्वरी न देयं परशिष्येभ्यो भक्तेभ्योऽपि विशेषतः देयं शिष्याय भक्ताय प्राणेभ्योऽप्यधिकाय च देव्याश्च छिन्नमस्ताय कवचस्य च भैरवः ऋषिस्तु स्याद्विराट् छन्दो देवताश्छिन्नमस्तका त्रैलोक्यविजये मुक्तौ विनियोगः प्रकीर्तितः हुङ्कारो मे शिरः पातु छिन्नमस्ता बलप्रदा ह्रां ह्रूं ऐं त्र्यक्षरी पातु भालं वक्रं दिगम्बरा श्रीं ह्रीं हूं ऐं दृशौ पातु मुण्डं कर्तृधरापि सा विद्या प्रणवाद्यन्ता श्रुतियुग्मं सदावतु वज्रैवैरोचनीये हुं फट् स्वाहा च ध्रुवादिका घ्राणं पातुच्छिन्नमस्ता मुण्डकर्तृविधारिणी श्रीमाया कूर्चवाग्बीजैर्वज्रवैरोचनीयह्रूं हूं फट् स्वाहा महाविद्या षोडशी ब्रह्मरूपिणी स्वपार्श्वे वर्णिनी चाश्रिक् धारां पाययति मुदा वदनं सर्वदा पातु छिन्नमस्ता स्वशक्तिका मुण्डकर्तृधरा रक्ता साधकाभीष्टदायिनी वर्णिनी डाकिनी युता शापि मामभितोऽवतु रामाद्या पातु जिह्वां च लज्जाद्या पातु कण्ठकं कूर्चाद्या हृदयं पातु वागाद्यास्तनयुग्मकं रमया पुटिता विद्या पार्श्वौ पातु सुरेश्वरी मायया पुटिता पातु नाभिदेशे दिगम्बरा कूर्चेण पुटिता देवी पृष्ठदेशे सदावतु वाग्बीजपुटिता चैषा मध्यं पातु सशक्तिका ईश्वरी कूर्चवाग्बीजैर्वज्रवैरोचनीयह्रूं हूं फट् स्वाहा महाविद्या कोटिसूर्यसमप्रभा छिन्नमस्ता सदा पायात् गुरुयुग्मं सशक्तिका ह्रीं ह्रूं वर्णिनी जानुं श्रीं ह्रीं च डाकिनी पदं सर्वविद्यास्थिता नित्या सर्वाङ्गं मे सदावतु प्राच्यां पायादेकलिङ्गा योगिनी पावकेवतु डाकिनी दक्षिणे पातु श्रीमहाभैरवी च मां नैररित्यां सततं पातु भैरवी पश्चिमेवतु इन्द्राक्षी पातु वायव्ये शिताङ्गी पातु चोत्तरे संहारिणी सदा पातु शिवकोणे सकर्त्रिका इत्यष्टशक्तयः पान्तु दिग्विदिक्षु सकर्त्रिकाः क्रीं 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 पातु सा पूर्वं ह्रीं ह्रीं मां पातु पावके ह्रूं ह्रूं मां दक्षिणे पातु दक्षिणे कालिकावतु क्रीं 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 चैव नैररित्यां ह्रीं ह्रीं च पश्चिमेवतु ह्रूं ह्रूं पातु मरुत्कोणे स्वाहा पातु सदोत्तरे महाकाली खड्गहस्ता रक्षः कोणे सदावतु तारो मायावधू कूर्चं फट्कारूयं महामनुः खड्गकर्तृधरा तारा चोर्ध्वदेशं सदावतु ह्रीं श्रीं हूं फट् च पाताले मां पातु चैकजटा सती तारा तु सहिताखेव्यान् महानीलसरस्वती इति ते कथितं देव्याः कवचं मन्त्रविग्रहं यद्धृत्वा पठनान् भीमः क्रोधाख्यो भैरवः स्मृतः सुरासुरमुनीन्द्राणां कर्ता हर्ता भवेत् स्वयं यस्याज्ञया मधुमती याति सा साधकालयं भूतिन्यायाद्यडाकिन्यो यक्षिण्याद्याश्च खेचराः आज्ञां गृह्णन्ति तास्तस्य कवचस्य प्रसादतः एतदेवं परं ब्रह्म कवचं मनमुखोदितं देवीमभ्यर्च्य गन्धाद्यैर्मूलेनैव पठेत् सकृत् संवत्सरकृतायास्तु
पूजायाः फलमाप्नुयात् भूर्जे विलिखितं चैतत् गुटिकां काञ्चनस्थितां धारयेत् दक्षिणे बाहु कण्ठे वा यदि वान्यतः सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्यं वशमानयेत् तस्य गेहे वशे लक्ष्मीर् वाणी च वदनाम्बुजे ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रे यान्ति सौम्यताम् इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छिन्नमस्तकाम् सोऽपि शस्त्रप्रहारेण मृत्युमाप्नोति सत्वरम् श्री छिन्नमस्ता देव्यार्पणमस्तु। अथ श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। श्री पार्वत्युवाच नाम्नां सहस्रमं परमं छिन्नमस्ता प्रियं शुभं कथितं भवता शम्भो सद्यः शत्रुनिकृन्तनं पुनः पृच्छाम्यहं देव कृपां कुरु ममोपरि सहस्रनाम पाठे च अशक्तो यः पुमान् भवेत् तेन किं पठ्यते नाथ तन्मे ब्रूहि कृपामय। श्री सदाशिव उवाच अष्टोत्तरशतं नाम्नां पठ्यते तेन सर्वदा सहस्रनाम पाठस्य फलं प्राप्नोति निश्चितम्। ओम अस्य श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री छिन्नमस्ता देवता मम सकल सिद्धि प्राप्तये जपे विनियोगः। ओम छिन्नमस्ता महाविद्या महाभीमा महोदरी चंडेश्वरी चंडमाता चंडमुंड प्रभंजिनी महाचंडा चंडरूपा चंडिका चंडखंडिनी क्रोधिनी क्रोधजननी क्रोधरूपा कुहूकला कोपातुरा कोपयुता कोपसंहारकारिणी वज्रवैरोचनी वज्रा वज्रकल्पा च डाकिनी डाकिनी कर्म निरता डाकिनी कर्म पूजिता डाकिनी संग निरता डाकिनी प्रेम पूरिता खटवांगधारिणी खरवा खड्ग खप्पर धारिणी प्रेतासना प्रेतयुता प्रेतसंग विहारिणी छिन्नमुंडधरा छिन्न चंड विद्या च चित्रिणी घोररूपा घोरदृष्टिर् घोररावाघनोवरी योगिनी योगनिरता जपयज्ञपरायणा योनिचक्रमयी योनिर् योनिचक्रप्रवर्तिनी योनिमुद्रा योनिगम्या योनियन्त्रनिवासिनी यन्त्ररूपा यन्त्रमयी यन्त्रेशी यन्त्रपूजिता कीर्त्या कपार्दिनी काली कंकाली कलकारिणी आरक्ता रक्तनयना रक्तपानपरायणा भवानी भूतिदा भूतिर् भूतिदात्री च भैरवी भैरवाचार निरता भूतभैरवसेविता भीमा भीमेश्वरी देवी भीमनादपरायणा भवाराध्या भवनुता भवसागरतारिणी भद्रकाली भद्रतनुर् भद्ररूपा च भद्रिका भद्ररूपा महाभद्रा सुभद्रा भद्रपालिनी सुभव्या भव्यवदना सुमुखी सिद्धसेविता सिद्धिदा सिद्धिनिवहा सिद्धा सिद्धनिसेविता शुभदा शुभगा शुद्धा शुद्धसत्त्वा शुभावहा श्रेष्ठा दृष्टिमयी देवी दृष्टिसंहारकारिणी सर्वाणी सर्वगा सर्वा सर्वमंगलकारिणी शिवा शांता शांतिरूपा मृडानी मदनातुरा इति ते कथितं देवी स्तोत्रं परमदुर्लभं गुह्याद् गुह्यतरं गोप्यं गोपनीयं प्रयत्नतः किमत्र बहुनोक्तेन त्वदग्रं प्राणवल्लभे मारणं मोहनं देवी ह्युच्चाटनमतः परं स्तम्भनादिककर्माणि रिद्धयः सिद्धयोऽपि च त्रिकालपठनादस्य सर्वे सिद्ध्यन्त्यसंशयः महोत्तमं स्तोत्रमिदं वरानने मयेरितं नित्यमनन्यबुद्धयः पठन्ति ये भक्तियुता नरोत्तमा भवेन्न तेषां रिपुभिः पराजयः। अथ श्री छिन्नमस्ता कवचम्
देव्युवाच कथिताश्चिन्नमस्ताय या विद्यासु गोपिताः त्वया नाथेन जीवेश श्रुताश्चाधिगता मया इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं सर्वसूचितं त्रैलोक्यविजयं नाम कृपया कथ्यतां प्रभो। भैरव उवाच शृणु वक्ष्यामि देवेशि सर्वदेव नमस्कृते त्रैलोक्यविजयं नाम कवचं सर्वमोहनं सर्वविद्यामयं साक्षात् सुरात् सुरजयप्रदं धारणात् पठनाद्दीशस् त्रैलोक्यविजयी विभुः ब्रह्मा नारायणो रुद्रो धारणात् पठनाद्यतः कर्ता पाता च संहर्ता भुवनानां सुरेश्वरी न देयं परशिष्येभ्यो भक्तेभ्योऽपि विशेषतः देयं शिष्याय भक्ताय प्राणेभ्योऽप्यधिकाय च देव्याश्च छिन्नमस्तायः कवचस्य च भैरवः ऋषिस्तु स्याद्विराट् छन्दो देवताश्छिन्नमस्तका त्रैलोक्यविजये मुक्तौ विनियोगः प्रकीर्तितः हुंकारो मे शिरः पातु छिन्नमस्ता बलप्रदा ह्रां ह्रूं ऐं त्र्यक्षरी पातु भालं वक्रं दिगंबरा श्रीं ह्रीं हूं ऐं दृशौ पातु मुंडं कर्तृधरापि सा विद्या प्रणवाद्यन्ता श्रुतियुग्मं सदावतु वज्रैवैरोचनीये हुं फट् स्वाहा च ध्रुवादिका घ्राणं पातुच्छिन्नमस्ता मुण्डकर्तृविधारिणी श्रीमाया कूर्चवाग्बीजैर्वज्रवैरोचनीयह्रूं हूं फट् स्वाहा महाविद्या षोडशी ब्रह्मरूपिणी स्वपार्श्वे वर्णिनी चाश्रिक् धारां पाययति मुदा वदनं सर्वदा पातु छिन्नमस्ता स्वशक्तिका मुण्डकर्तृधरा रक्ता साधकाभीष्टदायिनी वर्णिनी डाकिनी युता शापि मामभितो वतु रामाद्या पातु जिह्वां च लज्जाद्या पातु कण्ठकं कूर्चाद्या हृदयं पातु वागाद्यास्तनयुग्मकं रमया पुटिता विद्या पार्श्वौ पातु सुरेश्वरी मायया पुटिता पातु नाभिदेशे दिगंबरा कूर्चेण पुटिता देवी पृष्ठदेशे सदावतु वाग्बीजपुटिता चैषा मध्यं पातु सशक्तिका ईश्वरी कूर्चवाग्बीजैर्वज्रवैरोचनीयह्रूं हूं फट् स्वाहा महाविद्या कोटिसूर्यसमप्रभा छिन्नमस्ता सदा पायात् गुरुयुग्मं सशक्तिका ह्रीं ह्रूं वर्णिनी जानुं श्रीं ह्रीं च डाकिनी पदं सर्वविद्यास्थिता नित्या सर्वाङ्गं मे सदावतु प्राच्यां पायादेकलिङ्गा योगिनी पावकेवतु डाकिनी दक्षिणे पातु श्रीमहाभैरवी च मां नैररित्यां सततं पातु भैरवी पश्चिमेवतु इन्द्राक्षी पातु वायव्ये शिताङ्गी पातु चोत्तरे संहारिणी सदा पातु शिवकोणे सकर्त्रिका इत्यष्टशक्तयः पान्तु दिग्विदिक्षु सकर्त्रिकाः क्रीं 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 पातु सा पूर्वं ह्रीं ह्रीं मां पातु पावके ह्रूं ह्रूं मां दक्षिणे पातु दक्षिणे कालिकावतु क्रीं 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 चैव नैररित्यां ह्रीं ह्रीं च पश्चिमेवतु ह्रूं ह्रूं पातु मरुत्कोणे स्वाहा पातु सदोत्तरे महाकाली खड्गहस्ता रक्षः कोणे सदावतु तारो मायावधू कूर्चं फटकारूयं महामनुः खड्गकर्तृधरा तारा चोर्ध्वदेशं सदावतु ह्रीं श्रीं हूं फट् च पाताले मां पातु चैकजटा सती तारा तु सहिताखेव्यान् महानीलसरस्वती इति ते कथितं देव्याः कवचं मन्त्रविग्रहं यद्धृत्वा पठनान् भीमः क्रोधाख्यो भैरवः स्मृतः सुरासुरमुनीन्द्राणां कर्ता हर्ता भवेत् स्वयं यस्याज्ञया मधुमती याति सा साधकालयं भूतिन्यायाद्य डाकिन्यो
यक्षिण्याद्याश्च खेचराः आज्ञां गृह्णन्ति तास्तस्य कवचस्य प्रसादतः एतदेवं परं ब्रह्म कवचं मनमुखोदितं देवीमभ्यर्च्य गन्धाद्यैर्मूलेनैव पठेत् सकृत् संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात् भूर्जे विलिखितं चैतत् गुटिकां काञ्चनस्थितां धारयेत् दक्षिणे बाहु कण्ठे वा यदि वान्यतः सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्यं वशमानयेत् तस्य गेहे वशे लक्ष्मीर्वाणी च वदनाम्बुजे ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रे यान्ति सौम्यताम् इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छिन्नमस्तकां सोऽपि शस्त्रप्रहारेण मृत्युमाप्नोति सत्वरम् श्री छिन्नमस्ता देव्यार्पणमस्तु। अथ श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र। श्रीपार्वत्युवाच नाम्नां सहस्रमं परमं छिन्नमस्ता प्रियं शुभं कथितं भवता शम्भो सद्यः शत्रुनिकृन्तनं पुनः पृच्छाम्यहं देव कृपां कुरु ममोपरि सहस्रनाम पाठे च अशक्तो यः पुमान् भवेत् तेन किं पठ्यते नाथ तन्मे ब्रूहि कृपामय। श्री सदाशिव उवाच अष्टोत्तरशतं नाम्नां पठ्यते तेन सर्वदा सहस्रनाम पाठस्य फलं प्राप्नोति निश्चितम्। ओम अस्य श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री छिन्नमस्ता देवता मम सकलसिद्धि प्राप्तये जपे विनियोगः। ओम छिन्नमस्ता महाविद्या महाभीमा महोदरी चंडेश्वरी चंडमाता चंडमुंडप्रभंजिनी महाचंडा चंडरूपा चंडिका चंडखंडिनी क्रोधिनी क्रोधजननी क्रोधरूपा कुहूकला कोपातुरा कोपयुता कोपसंहारकारिणी वज्रवैरोचनी वज्रा वज्रकल्पा च डाकिनी डाकिनी कर्म निरता डाकिनी कर्म पूजिता डाकिनी संग निरता डाकिनी प्रेम पूरिता खटवांगधारिणी खरवा खड्ग खप्पर धारिणी प्रेतासना प्रेतयुता प्रेतसंग विहारिणी छिन्नमुंडधरा छिन्न चंड विद्या च चित्रिणी घोर रूपा घोर दृष्टिर घोर रावा घनोवरी योगिनी योग निरता जप यज्ञ परायणा योनि चक्रमयी योनिर योनि चक्र प्रवर्तिनी योनि मुद्रा योनि गम्या योनि यंत्र निवासिनी यंत्र रूपा यंत्रमयी यंत्रेशी यंत्र पूजिता कीर्त्या कपार्दिनी काली कंकाली कलकारिणी आरक्ता रक्तनयना रक्तपान परायणा भवानी भूतिदा भूतिर भूतिदात्री च भैरवी भैरवाचार निरता भूत भैरव सेविता भीमा भीमेश्वरी देवी भीमनाद परायणा भवाराध्या भवनुता भवसागर तारिणी भद्रकाली भद्रतनुर भद्ररूपा च भद्रिका भद्ररूपा महाभद्रा सुभद्रा भद्रपालिनी सुभव्या भव्यवदना सुमुखी सिद्धसेविता सिद्धिदा सिद्धिनिवहा सिद्धा सिद्धनिसेविता शुभदा शुभगा शुद्धा शुद्धसत्त्वा शुभावहा श्रेष्ठा दृष्टिमयी देवी दृष्टिसंहारकारिणी सर्वाणी सर्वगा सर्वा सर्वमंगलकारिणी शिवा शांता शांतिरूपा मृडानी मदनातुरा इति ते कथितं देवी स्तोत्रं परम दुर्लभं गुह्याद् गुह्यतरं गोप्यं गोपनीयं प्रयत्नतः किमत्र बहुनोक्तेन त्वदग्रं प्राणवल्लभे मारणं मोहनं देवी ह्युच्चाटनमतः परं स्तम्भनादिककर्माणि
रिद्धयः सिद्धयोऽपि च त्रिकालपठनादस्य सर्वे सिद्ध्यन्त्य संशयः महोत्तमं स्तोत्रमिदं वरानने मयेरितं नित्यमनन्यबुद्धयः पठन्ति ये भक्तियुता नरोत्तमा भवेन्न तेषां रिपुभिः पराजयः। अथ श्री छिन्नमस्ता कवचम्। देव्युवाच कथिताश्छिन्नमस्ताय या विद्यासु गोपिताः त्वया नाथेन जीवेश श्रुताश्चाधिगता मया इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं सर्वसूचितं त्रैलोक्यविजयं नाम कृपया कथ्यतां प्रभो। भैरव उवाच शृणु वक्ष्यामि देवेशि सर्वदेव नमस्कृते त्रैलोक्यविजयं नाम कवचं सर्वमोहनं सर्वविद्यामयं साक्षात् सुरात्सुरजयप्रदं धारणात् पठनाद्दीशस् त्रैलोक्यविजयी विभुः। ब्रह्मा नारायणो रुद्रो धारणात् पठनाद्यतः कर्ता पाता च संहर्ता भुवनानां सुरेश्वरी न देयं परशिष्येभ्यो भक्तेभ्योऽपि विशेषतः देयं शिष्याय भक्ताय प्राणेभ्योऽप्यधिकाय च देव्याश्च छिन्नमस्तायाः कवचस्य च भैरवः। ऋषिस्तु स्याद्विराट् छन्दो देवताश्छिन्नमस्तका त्रैलोक्यविजये मुक्तौ विनियोगः प्रकीर्तितः हुंकारो मे शिरः पातु छिन्नमस्ता बलप्रदा ह्रां ह्रूं ऐं त्र्यक्षरी पातु भालं वक्रं दिगंबरा श्रीं ह्रीं हूं ऐं दृशौ पातु मुंडं कर्तृधरापि सा विद्या प्रणवाद्यन्ता श्रुतियुग्मं सदावतु वज्रैर्वैरोचनीये हुं फट् स्वाहा च ध्रुवादिका घ्राणं पातुच्छिन्नमस्ता मुंडकर्तृविधारिणी श्रीमाया कूर्चवाग्बीजैर्वज्रवैरोचनीयह्रूं हूं फट् स्वाहा महाविद्या षोडशी ब्रह्मरूपिणी स्वपार्श्वे वर्णिनी चाश्रिक् धारां पाययति मुदा वदनं सर्वदा पातु छिन्नमस्ता स्वशक्तिका मुंडकर्तृधरा रक्ता साधकाभीष्टदायिनी वर्णिनी डाकिनी युता शापि मामभितोऽवतु रामाद्या पातु जिह्वां च लज्जाद्या पातु कण्ठकं कूर्चाद्या हृदयं पातु वागाद्यास्तनयुग्मकं रमया पुटिता विद्या पार्श्वौ पातु सुरेश्वरी मायया पुटिता पातु नाभिदेशे दिगंबरा कूर्चेण पुटिता देवी पृष्ठदेशे सदावतु वाग्बीजपुटिता चैषा मध्यं पातु सशक्तिका ईश्वरी कूर्च वाग्बीजैर्वज्रवैरोचनीयह्रूं हूं फट् स्वाहा महाविद्या कोटिसूर्यसमप्रभा छिन्नमस्ता सदा पायात् गुरुयुग्मं सशक्तिका ह्रीं ह्रूं वर्णिनी जानुं श्रीं ह्रीं च डाकिनी पदं सर्वविद्यास्थिता नित्या सर्वांगं मे सदावतु प्राच्यां पायादेकलिंगा योगिनी पावकेवतु डाकिनी दक्षिणे पातु श्रीमहाभैरवी च मां नैररित्यां सततं पातु भैरवी पश्चिमेवतु इंद्राक्षी पातु वायव्ये शितांगी पातु चोत्तरे संहारिणी सदा पातु शिवकोणे सकर्त्रिका इत्यष्टशक्तयः पान्तु दिग्विदिक्षु सकर्त्रिकाः क्रीं 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 पातु सा पूर्वं ह्रीं ह्रीं मां पातु पावके ह्रूं ह्रूं मां दक्षिणे पातु दक्षिणे कालिकावतु क्रीं 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 चैव नैररित्यां ह्रीं ह्रीं च पश्चिमेवतु ह्रूं ह्रूं पातु मरुत्कोणे स्वाहा पातु सदोत्तरे महाकाली खड्गहस्ता रक्षः कोणे सदावतु तारो मायावधू कूर्चं फटकारूयं महामनुः खड्गकर्तृधरा तारा चोर्ध्वदेशं सदावतु ह्रीं श्रीं हूं फट् च पाताले मां पातु चैकजटा सती
तारातुषहिताखेब्यान् महानीलसरस्वती इति ते कथितं देव्याः कवचं मन्त्रविग्रहं यद्धृत्वा पठनान् भीमः क्रोधाख्यो भैरवः स्मृतः सुरासुरमुनीन्द्राणां कर्ता हर्ता भवेत् स्वयं यस्याज्ञया मधुमती याति सा साधकालयं भूतिन्यायाद्यडाकिन्यो यक्षिण्याद्याश्च खेचराः आज्ञां गृह्णन्ति तास्तस्य कवचस्य प्रसादतः एतदेवं परं ब्रह्म कवचं मनमुखोदितं देवीमभ्यर्च्य गन्धाद्यैर्मूलेनैव पठेत् सकृत् संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात् भूर्जे विलिखितं चैतत् गुटिकां काञ्चनस्थितां धारयेत् दक्षिणे बाहु कण्ठे वा यदि वान्यतः सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्यं वशमानयेत् तस्य गेहे वसे लक्ष्मीर्वाणी च वदनाम्बुजे ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रे यान्ति सौम्यताम् इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छिन्नमस्तकां सोऽपि सत्रप्रहारेण मृत्युमाप्नोति सत्वरम् श्री छिन्नमस्ता देव्यार्पणमस्तु। अथ श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। श्रीपार्वत्युवाच नाम्नां सहस्रमं परमं छिन्नमस्ता प्रियं शुभं कथितं भवता शम्भो सद्यः शत्रुनिकृन्तनं पुनः पृच्छाम्यहं देव कृपां कुरु ममोपरि सहस्रनाम पाठे च अशक्तो यः पुमान् भवेत् तेन किं पठ्यते नाथ तन्मे ब्रूहि कृपामय। श्री सदाशिव उवाच अष्टोत्तरशतं नाम्नां पठ्यते तेन सर्वदा सहस्रनाम पाठस्य फलं प्राप्नोति निश्चितम्। ओम अस्य श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री छिन्नमस्ता देवता मम सकलसिद्धि प्राप्तये जपे विनियोगः। ओम छिन्नमस्ता महाविद्या महाभीमा महोदरी चंडेश्वरी चंडमाता चंडमुंडप्रभंजिनी महाचंडा चंडरूपा चंडिका चंडखंडिनी क्रोधिनी क्रोधजननी क्रोधरूपा कुहूकला कोपातुरा कोपयुता कोपसंहारकारिणी वज्रवैरोचनी वज्रा वज्रकल्पा च डाकिनी डाकिनी कर्म निरता डाकिनी कर्म पूजिता डाकिनी संग निरता डाकिनी प्रेम पूरिता खटवांगधारिणी खरवा खड्ग खप्पर धारिणी प्रेतासना प्रेतयुता प्रेतसंग विहारिणी छिन्नमुंडधरा छिन्न चंड विद्या च चित्रिणी घोर रूपा घोर दृष्टिर घोर रावा घनोवरी योगिनी योग निरता जप यज्ञ परायणा योनि चक्रमयी योनिर योनि चक्र प्रवर्तिनी योनि मुद्रा योनि गम्या योनि यंत्र निवासिनी यंत्र रूपा यंत्रमयी यंत्रेशी यंत्र पूजिता कीर्त्या कपार्दिनी काली कंकाली कलकारिणी आरक्ता रक्तनयना रक्तपान परायणा भवानी भूतिदा भूतिर् भूतिदात्री च भैरवी भैरवाचार निरता भूत भैरव सेविता भीमा भीमेश्वरी देवी भीमनाद परायणा भवाराध्या भवनुता भवसागर तारिणी भद्रकाली भद्रतनुर भद्ररूपा च भद्रिका भद्ररूपा महाभद्रा सुभद्रा भद्रपालिनी सुभव्या भव्यवदना सुमुखी सिद्धसेविता सिद्धिदा सिद्धिनिवहा सिद्धा सिद्धनिसेविता शुभदा शुभगा शुद्धा शुद्ध सत्वा शुभावहा श्रेष्ठा दृष्टिमयी देवी दृष्टिसंहारकारिणी सर्वाणी सर्वगा सर्वा सर्वमंगलकारिणी
शिवा शान्ता शान्तिरूपा मृडानी मदनातुरा इति ते कथितं देवी स्तोत्रं परमदुर्लभं गुह्याद् गुह्यतरं गोप्यं गोपनीयं प्रयत्नतः किमत्र बहुनोक्तेन त्वदग्रं प्राणवल्लभे मारणं मोहनं देवी ह्युच्चाटनमतः परं स्तम्भनादिककर्माणि रिद्धयः सिद्धयोऽपि च त्रिकालपठनादस्य सर्वे सिद्ध्यन्त्यसंशयः महोत्तमं स्तोत्रमिदं वरानने मयेरितं नित्यमनन्यबुद्धयः पठन्ति ये भक्तियुता नरोत्तमा भवेन्न तेषां रिपुभिः पराजयः। अथ श्री छिन्नमस्ता कवचम्। देव्युवाच कथिताश्छिन्नमस्ताया या विद्यासु गोपिताः त्वया नाथेन जीवेश श्रुताश्चाधिगता मया इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं सर्वसूचितं त्रैलोक्यविजयं नाम कृपया कथ्यतां प्रभो। भैरव उवाच शृणु वक्ष्यामि देवेशि सर्वदेव नमस्कृते त्रैलोक्यविजयं नाम कवचं सर्वमोहनं सर्वविद्यामयं साक्षात् सुरात्सुरजयप्रदं धारणात् पठनाद्दीशस् त्रैलोक्यविजयी विभुः ब्रह्मा नारायणो रुद्रो धारणात् पठनाद्यतः कर्ता पाता च संहर्ता भुवनानां सुरेश्वरी न देयं परशिष्येभ्यो भक्तेभ्योऽपि विशेषतः देयं शिष्याय भक्ताय प्राणेभ्योऽप्यधिकाय च देव्याश्च छिन्नमस्तायाः कवचस्य च भैरवः ऋषिस्तु स्याद्विराट् छन्दो देवताश्छिन्नमस्तका त्रैलोक्यविजये मुक्तौ विनियोगः प्रकीर्तितः हुंकारो मे शिरः पातु छिन्नमस्ता बलप्रदा ह्रां ह्रूं ऐं त्र्यक्षरी पातु भालं वक्रं दिगंबरा श्रीं ह्रीं हूं ऐं दृशौ पातु मुंडं कर्त्रिधरापि सा विद्या प्रणवाद्यन्ता श्रुतियुग्मं सदावतु वज्रैवैरोचनीये हुं फट् स्वाहा च ध्रुवादिका घ्राणं पातुच्छिन्नमस्ता मुण्डकर्त्रिविधारिणी श्रीमाया कूर्चवाग्बीजैर्वज्रवैरोचनीय ह्रूं हूं फट् स्वाहा महाविद्या षोडशी ब्रह्मरूपिणी स्वपार्श्वे वर्णिनी चाश्रिक् धारां पाययति मुदा वदनं सर्वदा पातुश्छिन्नमस्ता स्वशक्तिका मुण्डकर्त्रिधरा रक्ता साधकाभीष्टदायिनी वर्णिनी डाकिनी युता शापि मामभितोऽवतु रामाद्या पातु जिह्वां च लज्जाद्या पातु कण्ठकं कूर्चाद्या हृदयं पातु वागाद्यास्तनयुग्मकं रमया पुटिता विद्या पार्श्वौ पातु सुरेश्वरी मायया पुटिता पातु नाभिदेशे दिगंबरा कूर्चेण पुटिता देवी पृष्ठदेशे सदावतु वाग्बीजपुटिता चैषा मध्यं पातु सशक्तिका ईश्वरी कूर्चवाग्बीजैर्वज्रवैरोचनीय ह्रूं हूं फट् स्वाहा महाविद्या कोटिसूर्यसमप्रभा छिन्नमस्ता सदा पायात् गुरुयुग्मं सशक्तिका ह्रीं ह्रूं वर्णिनी जानुं श्रीं ह्रीं च डाकिनी पदं सर्वविद्यास्थिता नित्या सर्वांगं मे सदावतु प्राच्यां पायादेकलिंगा योगिनी पावकेवतु डाकिनी दक्षिणे पातु श्रीमहाभैरवी च मां नैररित्यां सततं पातु भैरवी पश्चिमेवतु इन्द्राक्षी पातु वायव्ये शितांगी पातु चोत्तरे संहारिणी सदा पातु शिवकोणे सकर्त्रिका इत्यष्टशक्तयः पान्तु दिग्विदिक्षु सकर्त्रिकाः क्रीं 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 पातु सा पूर्वं ह्रीं ह्रीं मां पातु पावके ह्रूं ह्रूं मां दक्षिणे
पातु दक्षिणे कालिकावतु क्रीं 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 चैव नैररित्यां ह्रीं ह्रीं च पश्चिमेवतु ह्रूं ह्रूं पातु मरुत्कोणे स्वाहा पातु सदोत्तरे महाकाली खड्गहस्ता रक्षः कोणे सदावतु तारो मायावधूकूर्चं फट्कारूयं महामनुः खड्गकर्तृधरा तारा चोर्ध्वदेशं सदावतु ह्रीं श्रीं हुं फट् च पाताले मां पातु चैकजटा सती तारा तु सहिताखेब्यान् महानीलसरस्वती इति ते कथितं देव्याः कवचं मन्त्रविग्रहं यद्धृत्वा पठनान् भीमः क्रोधाख्यो भैरवः स्मृतः सुरासुरमुनीन्द्राणां कर्ता हर्ता भवेत् स्वयं यस्याज्ञया मधुमती याति सा साधकालयं भूतिन्यायाद्यडाकिन्यो यक्षिण्याद्याश्च खेचराः आज्ञां गृह्णन्ति तास्तस्य कवचस्य प्रसादतः एतदेवं परं ब्रह्म कवचं मनमुखोदितं देवीमभ्यर्च्य गन्धाद्यैर्मूलेनैव पठेत् सकृत् संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात् भूर्जे विलिखितं चैतत् गुटिकां काञ्चनस्थितां धारयेत् दक्षिणे बाहु कण्ठे वा यदि वान्यतः सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्यं वशमानयेत् तस्य गेहे वसे लक्ष्मीर्वाणी च वदनाम्बुजे ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रे यान्ति सौम्यताम् इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छिन्नमस्तकां सोऽपि सत्रप्रहारेण मृत्युमाप्नोति सत्वरं श्री छिन्नमस्ता देव्यार्पणमस्तु। अथ श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। श्रीपार्वत्युवाच नाम्नां सहस्रमं परमं छिन्नमस्ता प्रियं शुभं कथितं भवता शम्भो सद्यः शत्रुनिकृन्तनं पुनः पृच्छाम्यहं देव कृपां कुरु ममोपरि सहस्रनाम पाठे च अशक्तो यः पुमान् भवेत् तेन किं पठ्यते नाथ तन्मे ब्रूहि कृपामय। श्री सदाशिव उवाच अष्टोत्तरशतं नाम्नां पठ्यते तेन सर्वदा सहस्रनाम पाठस्य फलं प्राप्नोति निश्चितम्। ओम अस्य श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री छिन्नमस्ता देवता मम सकल सिद्धि प्राप्तये जपे विनियोगः। ओम छिन्नमस्ता महाविद्या महाभीमा महोदरी चंडेश्वरी चंडमाता चंडमुंड प्रभंजिनी महाचंडा चंडरूपा चंडिका चंडखंडिनी क्रोधिनी क्रोधजननी क्रोधरूपा कुहूकला कोपातुरा कोपयुता कोपसंहारकारिणी वज्रवैरोचनी वज्रा वज्रकल्पा च डाकिनी डाकिनी कर्म निरता डाकिनी कर्म पूजिता डाकिनी संग निरता डाकिनी प्रेम पूरिता खटवांगधारिणी खरवा खड्ग खप्पर धारिणी प्रेतासना प्रेतयुता प्रेतसंग विहारिणी छिन्नमुंडधरा छिन्न चंड विद्या च चित्रिणी घोर रूपा घोर दृष्टिर घोर रावा घनोवरी योगिनी योग निरता जप यज्ञ परायणा योनि चक्रमयी योनिर योनि चक्र प्रवर्तिनी योनि मुद्रा योनि गम्या योनि यंत्र निवासिनी यंत्र रूपा यंत्रमयी यंत्रेशी यंत्र पूजिता कीर्त्या कपार्दिनी काली कंकाली कलकारिणी आरक्ता रक्तनयना रक्तपान परायणा भवानी भूतिदा भूतिर भूतिदात्री च भैरवी भैरवाचार निरता भूत भैरव सेविता भीमा भीमेश्वरी देवी भीमनाद परायणा भवाराध्या भवनुता भवसागर तारिणी
भद्रकाली भद्रतनुर्भद्ररूपा च भद्रिका भद्ररूपा महाभद्रा सुभद्रा भद्रपालिनी सुभव्या भव्यवदना सुमुखी सिद्धसेविता सिद्धिदा सिद्धिनिवहा सिद्धा सिद्धनिसेविता शुभदा शुभगा शुद्धा शुद्धसत्त्वा शुभावहा श्रेष्ठा दृष्टिमयी देवी दृष्टिसंहारकारिणी सर्वाणी सर्वगा सर्वा सर्वमंगलकारिणी शिवा शांता शांतिरूपा मृडानी मदनातुरा इति ते कथितं देवी स्तोत्रं परमदुर्लभं गुह्याद् गुह्यतरं गोप्यं गोपनीयं प्रयत्नतः किमत्र बहुनोक्तेन त्वदग्रं प्राणवल्लभे मारणं मोहनं देवी ह्युच्चाटनमतः परं स्तम्भनादिककर्माणि रिद्धयः सिद्धयोऽपि च त्रिकालपठनादस्य सर्वे सिद्ध्यन्त्यसंशयः महोत्तमं स्तोत्रमिदं वरानने मयेरितं नित्यमनन्यबुद्धयः पठन्ति ये भक्तियुता नरोत्तमा भवेन्न तेषां रिपुभिः पराजयः। अथ श्री छिन्नमस्ता कवचम्। देव्युवाच कथिताश्छिन्नमस्ताया या विद्यासु गोपिताः त्वया नाथेन जीवेश श्रुताश्चाधिगता मया इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं सर्वसूचितं त्रैलोक्यविजयं नाम कृपया कथ्यतां प्रभो। भैरव उवाच शृणु वक्ष्यामि देवेशि सर्वदेव नमस्कृते त्रैलोक्यविजयं नाम कवचं सर्वमोहनं सर्वविद्यामयं साक्षात् सुरात्सुरजयप्रदं धारणात् पठनाद्दीशस् त्रैलोक्यविजयी विभुः ब्रह्मा नारायणो रुद्रो धारणात् पठनाद्यतः कर्ता पाता च संहर्ता भुवनानां सुरेश्वरी न देयं परशिष्येभ्यो भक्तेभ्योऽपि विशेषतः देयं शिष्याय भक्ताय प्राणेभ्योऽप्यधिकाय च देव्याश्च छिन्नमस्तायाः कवचस्य च भैरवः ऋषिस्तु स्याद्विराट् छन्दो देवताश्छिन्नमस्तका त्रैलोक्यविजये मुक्तौ विनियोगः प्रकीर्तितः हुंकारो मे शिरः पातु छिन्नमस्ता बलप्रदा ह्रां ह्रूं ऐं त्र्यक्षरी पातु भालं वक्रं दिगंबरा श्रीं ह्रीं हूं ऐं दृशौ पातु मुंडं कर्त्रिधरापि सा विद्या प्रणवाद्यन्ता श्रुतियुग्मं सदावतु वज्रैवैरोचनीये हुं फट् स्वाहा च ध्रुवादिका घ्राणं पातुच्छिन्नमस्ता मुण्डकर्त्रिविधारिणी श्रीमाया कूर्चवाग्बीजैर्वज्रवैरोचनीय ह्रूं हूं फट् स्वाहा महाविद्या षोडशी ब्रह्मरूपिणी स्वपार्श्वे वर्णिनी चाश्रिक् धारां पाययति मुदा वदनं सर्वदा पातु छिन्नमस्ता स्वशक्तिका मुण्डकर्त्रिधरा रक्ता साधकाभीष्टदायिनी वर्णिनी डाकिनी युता शापि मामभितोऽवतु रामाद्या पातु जिह्वां च लज्जाद्या पातु कण्ठकं कूर्चाद्या हृदयं पातु वागाद्यास्तनयुग्मकं रमया पुटिता विद्या पार्श्वौ पातु सुरेश्वरी मायया पुटिता पातु नाभिदेशे दिगंबरा कूर्चेण पुटिता देवी पृष्ठदेशे सदावतु वाग्बीजपुटिता चैषा मध्यं पातु सशक्तिका ईश्वरी कूर्चवाग्बीजैर्वज्रवैरोचनीय ह्रूं हूं फट् स्वाहा महाविद्या कोटिसूर्यसमप्रभा छिन्नमस्ता सदा पायात् गुरुयुग्मं सशक्तिका ह्रीं ह्रूं वर्णिनी जानुं श्रीं ह्रीं च डाकिनी पदं सर्वविद्यास्थिता नित्या सर्वांगं मे सदावतु प्राच्यां पायाधिकलिंगा योगिनी पावकेवतु डाकिनी दक्षिणे पातु श्रीमहाभैरवी च मां नैररित्यां सततं पातु भैरवी पश्चिमेवतु इंद्राक्षी पातु वायव्ये शितांगी पातु चोत्तरे
ततोत्तरे संहारिणी सदा पातु शिवकोणे सकर्त्रिका इत्यष्टशक्तयः पान्तु दिग्विदिक्षु सकर्त्रिकाः क्रीं 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 पातु सा पूर्वं ह्रीं ह्रीं मां पातु पावके ह्रूं ह्रूं मां दक्षिणे पातु दक्षिणे कालिकावतु क्रीं 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 चैव नैररित्यां ह्रीं ह्रीं च पश्चिमे वतु ह्रूं ह्रूं पातु मरुत्कोणे स्वाहा पातु सदोत्तरे महाकाली खड्गहस्ता रक्षः कोणे सदावतु तारो मायावधूकूर्चं फट्कारूयं महामनुः खड्गकर्त्रिधरा तारा चोर्ध्वदेशं सदावतु ह्रीं श्रीं हुं फट् च पाताले मां पातु चैकजटा सती तारा तु सहिताखेव्यान् महानीलसरस्वती इति ते कथितं देव्याः कवचं मन्त्रविग्रहं यद्धृत्वा पठनान् भीमः क्रोधाख्यो भैरवः स्मृतः सुरासुरमुनीन्द्राणां कर्ता हर्ता भवेत् स्वयं यस्याज्ञया मधुमती याति सा साधकालयं भूतिन्यायाद्यडाकिन्यो यक्षिण्याद्याश्च खेचराः आज्ञां गृह्णन्ति तास्तस्य कवचस्य प्रसादतः एतदेवं परं ब्रह्म कवचं मनमुखोदितं देवीमभ्यर्च्य गन्धाद्यैर्मूलेनैव पठेत् सकृत् संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात् भूर्जे विलिखितं चैतत् गुटिकां काञ्चन स्थितां धारयेत् दक्षिणे बाहु कण्ठे वा यदि वान्यतः सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्यं वशमानयेत् तस्य गेहे वसे लक्ष्मीर्वाणी च वदनाम्बुजे ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रे यान्ति सौम्यताम् इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छिन्नमस्तकां सोऽपि सत्रप्रहारेण मृत्युमाप्नोति सत्वरम् श्री छिन्नमस्ता देव्यार्पणमस्तु। अथ श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। श्रीपार्वत्युवाच नाम्नां सहस्रमं परमं छिन्नमस्ता प्रियं शुभं कथितं भवता शम्भो सद्यः शत्रुनिकृन्तनं पुनः पृच्छाम्यहं देव कृपां कुरु ममोपरि सहस्रनाम पाठे च अशक्तो यः पुमान् भवेत् तेन किं पठ्यते नाथ तन्मे ब्रूहि कृपामय। श्रीसदाशिव उवाच अष्टोत्तरशतं नाम्नां पठ्यते तेन सर्वदा सहस्रनाम पाठस्य फलं प्राप्नोति निश्चितम्। ओम अस्य श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री छिन्नमस्ता देवता मम सकल सिद्धि प्राप्तये जपे विनियोगः। ओम छिन्नमस्ता महाविद्या महाभीमा महोदरी चंडेश्वरी चंडमाता चंडमुंड प्रभंजिनी महाचंडा चंडरूपा चंडिका चंडखंडिनी क्रोधिनी क्रोधजननी क्रोधरूपा कुहूकला कोपातुरा कोपयुता कोपसंहारकारिणी वज्रवैरोचनी वज्रा वज्रकल्पा च डाकिनी डाकिनी कर्म निरता डाकिनी कर्म पूजिता डाकिनी संग निरता डाकिनी प्रेम पूरिता खटवांगधारिणी खरवा खड्ग खप्पर धारिणी प्रेतासना प्रेतयुता प्रेतसंग विहारिणी छिन्नमुंडधरा छिन्न चंड विद्या च चित्रिणी घोररूपा घोरदृष्टिर् घोररावाघनोवरी योगिनी योगनिरता जपयज्ञपरायणा योनिचक्रमयी योनिचक्रप्रवर्तिनी योनिमुद्रा योनिगम्या योनियन्त्रनिवासिनी यन्त्ररूपा यन्त्रमयी यन्त्रेशी यन्त्रपूजिता कीर्त्या कपार्दिनी काली कंकाली कलकारिणी
आरक्तारक्तनयना रक्तपानपरायणा भवानी भूतिदा भूतिर्भूतिदात्री च भैरवी भैरवाचारनिरता भूतभैरवसेविता भीमा भीमेश्वरी देवी भीमनादपरायणा भवाराध्या भवनुता भवसागरतारिणी भद्रकाली भद्रतनुर्भद्ररूपा च भद्रिका भद्ररूपा महाभद्रा सुभद्रा भद्रपालिनी सुभव्या भव्यवदना सुमुखी सिद्धसेविता सिद्धिदा सिद्धिनिवहा सिद्धा सिद्धनिसेविता शुभदा शुभगा शुद्धा शुद्धसत्त्वा शुभावहा श्रेष्ठा दृष्टिमयी देवी दृष्टिसंहारकारिणी सर्वाणी सर्वगा सर्वा सर्वमंगलकारिणी शिवा शांता शांतिरूपा मृडानी मदनातुरा इति ते कथितं देवी स्तोत्रं परमदुर्लभं गुह्याद् गुह्यतरं गोप्यं गोपनीयं प्रयत्नतः किमत्र बहुनोक्तेन त्वदग्रं प्राणवल्लभे मारणं मोहनं देवी ह्युच्चाटनमतः परं स्तम्भनादिककर्माणि रिद्धयः सिद्धयोऽपि च त्रिकालपठनादस्य सर्वे सिद्ध्यन्त्यसंशयः महोत्तमं स्तोत्रमिदं वरानने मयेरितं नित्यमनन्यबुद्धयः पठन्ति ये भक्तियुता नरोत्तमा भवेन्न तेषां रिपुभिः पराजयः। अथ श्री छिन्नमस्ता कवचम् देव्युवाच कथिताश्छिन्नमस्ताया या विद्यासु गोपिताः त्वया नाथेन जीवेश श्रुताश्चाधिगता मया इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं सर्वसूचितं त्रैलोक्यविजयं नाम कृपया कथ्यतां प्रभो। भैरव उवाच शृणु वक्ष्यामि देवेशि सर्वदेव नमस्कृते त्रैलोक्यविजयं नाम कवचं सर्वमोहनं सर्वविद्यामयं साक्षात् सुरात् सुरजयप्रदं धारणात् पठनाद्दीशस् त्रैलोक्यविजयी विभुः ब्रह्मा नारायणो रुद्रो धारणात् पठनाद्यतः कर्ता पाता च संहर्ता भुवनानां सुरेश्वरी न देयं परशिष्येभ्यो भक्तेभ्योऽपि विशेषतः देयं शिष्याय भक्ताय प्राणेभ्योऽप्यधिकाय च देव्याश्च छिन्नमस्तायाः कवचस्य च भैरवः ऋषिस्तु स्याद्विराट् छन्दो देवताश्छिन्नमस्तका त्रैलोक्यविजये मुक्तौ विनियोगः प्रकीर्तितः हुंकारो मे शिरः पातु छिन्नमस्ता बलप्रदा ह्रां ह्रूं ऐं त्र्यक्षरी पातु भालं वक्रं दिगंबरा श्रीं ह्रीं हूं ऐं दृशौ पातु मुंडं कर्तृधरापि सा विद्या प्रणवाद्यन्ता श्रुतियुग्मं सदावतु वज्रैर्वैरोचनीये हुं फट् स्वाहा च ध्रुवादिका घ्राणं पातुच्छिन्नमस्ता मुंडकर्तृविधारिणी श्रीमाया कूर्चवाग्बीजैर्वज्रवैरोचनीयह्रूं हूं फट् स्वाहा महाविद्या षोडशी ब्रह्मरूपिणी स्वपार्श्वे वर्णिनी चाश्रिक् धारां पाययति मुदा वदनं सर्वदा पातु छिन्नमस्ता स्वशक्तिका मुंडकर्तृधरा रक्ता साधकाभीष्टदायिनी वर्णिनी डाकिनी युता शापि मामभितोऽवतु रामाद्या पातु जिह्वां च लज्जाद्या पातु कण्ठकं कूर्चाद्या हृदयं पातु वागाद्यास्तनयुग्मकं रमया पुटिता विद्या पार्श्वौ पातु सुरेश्वरी मायया पुटिता पातु नाभिदेशे दिगंबरा कूर्चेण पुटिता देवी पृष्ठदेशे सदावतु वाग्बीजपुटिता चैषा मध्यं पातु सशक्तिका ईश्वरी कूर्चवाग्बीजैर्वज्रवैरोचनीयह्रूं हूं फट् स्वाहा महाविद्या कोटिसूर्यसमप्रभा छिन्नमस्ता सदा पायात् गुरुयुग्मं सशक्तिका
ह्रीं ह्रूं वर्णिनी जानुं श्रीं ह्रीं च डाकिनी पदं सर्वविद्यास्थिता नित्या सर्वाङ्गं मे सदावतु प्राच्यां पायाधिकलिङ्गा योगिनी पावकेवतु डाकिनी दक्षिणे पातु श्रीमहाभैरवी च मां नैररित्यां सततं पातु भैरवी पश्चिमे वतु इन्द्राक्षी पातु वायव्ये श्रिताङ्गी पातु चोत्तरे संहारिणी सदा पातु शिवकोणे सकर्त्रिका इत्यष्टशक्तयः पान्तु दिग्विदिक्षु सकर्त्रिकाः क्रीं 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 पातु सा पूर्वं ह्रीं ह्रीं मां पातु पावके ह्रूं ह्रूं मां दक्षिणे पातु दक्षिणे कालिकावतु क्रीं 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 चैव नैररित्यां ह्रीं ह्रीं च पश्चिमे वतु ह्रूं ह्रूं पातु मरुत्कोणे स्वाहा पातु सदोत्तरे महाकाली खड्गहस्ता रक्षः कोणे सदावतु तारो मायावधूकूर्चं फट्कारूयं महामनुः खड्गकर्त्रिधरा तारा चोर्ध्वदेशं सदावतु ह्रीं श्रीं हुं फट् च पाताले मां पातु चैकजटा सती तारा तु सहिताखेव्यान् महानीलसरस्वती इति ते कथितं देव्याः कवचं मन्त्रविग्रहं यद्धृत्वा पठनान् भीमः क्रोधाख्यो भैरवः स्मृतः सुरासुरमुनीन्द्राणां कर्ता हर्ता भवेत् स्वयं यस्याज्ञया मधुमती याति सा साधकालयं भूतिन्यायाद्यडाकिन्यो यक्षिण्याद्याश्च खेचराः आज्ञां गृह्णन्ति तास्तस्य कवचस्य प्रसादतः एतदेवं परं ब्रह्म कवचं मनमुखोदितं देवीमभ्यर्च्य गन्धाद्यैर्मूलेनैव पठेत् सकृत् संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात् भूर्जे विलिखितं चैतत् गुटिकां काञ्चनस्थितां धारयेत् दक्षिणे बाहु कण्ठे वा यदि वान्यतः सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्यं वशमानयेत् तस्य गेहे वसे लक्ष्मीर्वाणी च वदनाम्बुजे ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रे यान्ति सौम्यताम् इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छिन्नमस्तकां सोऽपि सत्रप्रहारेण मृत्युमाप्नोति सत्वरम् श्री छिन्नमस्ता देव्यार्पणमस्तु। अथ श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र। श्रीपार्वत्युवाच नाम्नां सहस्रमं परमं छिन्नमस्ता प्रियं शुभं कथितं भवता शम्भो सद्यः शत्रुनिकृन्तनं पुनः पृच्छाम्यहं देव कृपां कुरु ममोपरि सहस्रनाम पाठे च अशक्तो यः पुमान् भवेत् तेन किं पठ्यते नाथ तन्मे ब्रूहि कृपामय। श्री सदाशिव उवाच अष्टोत्तरशतं नाम्नां पठ्यते तेन सर्वदा सहस्रनाम पाठस्य फलं प्राप्नोति निश्चितम्। ओम अस्य श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री छिन्नमस्ता देवता मम सकलसिद्धि प्राप्तये जपे विनियोगः। ओम छिन्नमस्ता महाविद्या महाभीमा महोदरी चण्डेश्वरी चण्डमाता चण्डमुण्डप्रभञ्जिनी महाचण्डा चण्डरूपा चण्डिका चण्डखण्डिनी क्रोधिनी क्रोधजननी क्रोधरूपा कुहूकला कोपातुरा कोपयुता कोपसंहारकारिणी वज्रवैरोचनी वज्रा वज्रकल्पा च डाकिनी डाकिनी कर्म निरता डाकिनी कर्म पूजिता डाकिनी संग निरता डाकिनी प्रेम पूरिता खटवांगधारिणी खरवा खड्ग खप्पर धारिणी प्रेतासना प्रेतयुता प्रेतसंग विहारिणी छिन्न मुंडधरा छिन्न चंड विद्या च चित्रिणी
घोररूपा घोरदृष्टिर्घोररावाघनोवरी योगिनी योगनिरता जपयज्ञपरायणा योनिचक्रमयी योनिचक्रप्रवर्तिनी योनिमुद्रा योनिगम्या योनियन्त्रनिवासिनी यन्त्ररूपा यन्त्रमयी यन्त्रेशी यन्त्रपूजिता कीर्त्या कपार्दिनी काली कंकाली कलकारिणी आरक्ता रक्तनयना रक्तपानपरायणा भवानी भूतिदा भूतिदात्री च भैरवी भैरवाचारनिरता भूतभैरवसेविता भीमा भीमेश्वरी देवी भीमनादपरायणा भवाराध्या भवनुता भवसागरतारिणी भद्रकाली भद्रतनुर्भद्ररूपा च भद्रिका भद्ररूपा महाभद्रा सुभद्रा भद्रपालिनी सुभव्या भव्यवदना सुमुखी सिद्धसेविता सिद्धिदा सिद्धिनिवहा सिद्धा सिद्धनिसेविता शुभदा शुभगा शुद्धा शुद्धसत्त्वा शुभावहा श्रेष्ठा दृष्टिमयी देवी दृष्टिसंहारकारिणी सर्वाणी सर्वगा सर्वा सर्वमंगलकारिणी शिवा शांता शांतिरूपा मृडानी मदनातुरा इति ते कथितं देवी स्तोत्रं परमदुर्लभं गुह्याद् गुह्यतरं गोप्यं गोपनीयं प्रयत्नतः किमत्र बहुनोक्तेन त्वदग्रं प्राणवल्लभे मारणं मोहनं देवी ह्युच्चाटनमतः परं स्तम्भनादिककर्माणि रिद्धयः सिद्धयोऽपि च त्रिकालपठनादस्य सर्वे सिद्ध्यन्त्यसंशयः महोत्तमं स्तोत्रमिदं वरानने मयेरितं नित्यमनन्यबुद्धयः पठन्ति ये भक्तियुता नरोत्तमा भवेन्न तेषां रिपुभिः पराजयः। अथ श्री छिन्नमस्ता कवचम् देव्युवाच कथिताश्छिन्नमस्ताया या विद्यासु गोपिताः त्वया नाथेन जीवेश श्रुताश्चाधिगता मया इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं सर्वसूचितं त्रैलोक्यविजयं नाम कृपया कथ्यतां प्रभो। भैरव उवाच शृणु वक्ष्यामि देवेशि सर्वदेव नमस्कृते त्रैलोक्यविजयं नाम कवचं सर्वमोहनं सर्वविद्यामयं साक्षात् सुरात् सुरजयप्रदं धारणात् पठनाद्दीशस्त्रैलोक्यविजयी विभुः ब्रह्मा नारायणो रुद्रो धारणात् पठनाद्यतः कर्ता पाता च संहर्ता भुवनानां सुरेश्वरी न देयं परशिष्येभ्यो भक्तेभ्योऽपि विशेषतः देयं शिष्याय भक्ताय प्राणेभ्योऽप्यधिकाय च देव्याश्च छिन्नमस्तायाः कवचस्य च भैरवः ऋषिस्तु स्याद्विराट् छन्दो देवताश्छिन्नमस्तका त्रैलोक्यविजये मुक्तौ विनियोगः प्रकीर्तितः हुंकारो मे शिरः पातु छिन्नमस्ता बलप्रदा ह्रां ह्रूं ऐं त्र्यक्षरी पातु भालं वक्रं दिगंबरा श्रीं ह्रीं हूं ऐं दृशौ पातु मुंडं कर्तिधरापि सा विद्या प्रणवाद्यन्ता श्रुतियुग्मं सदावतु वज्रैवैरोचनीये हुं फट् स्वाहा च ध्रुवादिका घ्राणं पातुच्छिन्नमस्ता मुंडकर्त्रिविधारिणी श्रीमाया कूर्चवाग्बीजैर्वज्रवैरोचनीयह्रूं हूं फट् स्वाहा महाविद्या षोडशी ब्रह्मरूपिणी स्वपार्श्वे वर्णिनी चाश्रिक् धारां पाययति मुदा वदनं सर्वदा पातु छिन्नमस्ता स्वशक्तिका मुंडकर्त्रिधरा रक्ता साधकाभीष्टदायिनी वर्णिनी डाकिनी युता शापि मामभितोवतु रामाद्या पातु जिह्वां च लज्जाद्या पातु कण्ठकं कूर्चाद्या हृदयं पातु वागाद्यास्तनयुग्मकं रमया पुटिता विद्या पार्श्वौ पातु सुरेश्वरी मायया पुटिता पातु नाभिदेशे दिगंबरा कूर्चेण पुटिता देवी
पृष्ठदेशे सदावतु वाग्बीजपुटिता चैषा मध्यं पातु सशक्तिका ईश्वरी कूर्च वाग्बीजैर्वज्रवैरोचनीय ह्रूं हुं फट् स्वाहा महाविद्या कोटिसूर्यसमप्रभा छिन्नमस्ता सदा पायात् गुरुयुग्मं सशक्तिका ह्रीं ह्रूं वर्णिनी जानुं श्रीं ह्रीं च डाकिनी पदं सर्वविद्यास्थिता नित्या सर्वाङ्गं मे सदावतु प्राच्यां पायादेकलिङ्गा योगिनी पावकेवतु डाकिनी दक्षिणे पातु श्रीमहाभैरवी च मां नैररित्यां सततं पातु भैरवी पश्चिमेवतु इन्द्राक्षी पातु वायव्ये श्रिताङ्गी पातु चोत्तरे संहारिणी सदा पातु शिवकोणे सकर्त्रिका इत्यष्टशक्तयः पान्तु दिग्विदिक्षु सकर्त्रिकाः क्रीं 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 पातु सा पूर्वं ह्रीं ह्रीं मां पातु पावके ह्रूं ह्रूं मां दक्षिणे पातु दक्षिणे कालिकावतु क्रीं 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 चैव नैररित्यां ह्रीं ह्रीं च पश्चिमेवतु ह्रूं ह्रूं पातु मरुत्कोणे स्वाहा पातु सदोत्तरे महाकाली खड्गहस्ता रक्षः कोणे सदावतु तारो मायावधू कूर्चं फट्कारूयं महामनुः खड्गकर्त्रिधरा तारा चोर्ध्वदेशं सदावतु ह्रीं श्रीं हुं फट् च पाताले मां पातु चैकजटा सती तारा तु सहिताखेब्यान् महानीलसरस्वती इति ते कथितं देव्याः कवचं मन्त्रविग्रहं यद्धृत्वा पठनान् भीमः क्रोधाख्यो भैरवः स्मृतः सुरासुरमुनीन्द्राणां कर्ता हर्ता भवेत् स्वयं यस्याज्ञया मधुमती याति सा साधकालयं भूतिन्यायाद्यडाकिन्यो यक्षिण्याद्याश्च खेचराः आज्ञां गृह्णन्ति तास्तस्य कवचस्य प्रसादतः एतदेवं परं ब्रह्म कवचं मनमुखोदितं देवीमभ्यर्च्य गन्धाद्यैर्मूलेनैव पठेत् सकृत् संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात् भूर्जे विलिखितं चैतत् गुटिकां काञ्चनस्थितां धारयेत् दक्षिणे बाहु कण्ठे वा यदि वान्यतः सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्यं वशमानयेत् तस्य गेहे वसे लक्ष्मीर्वाणी च वदनाम्बुजे ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रे यान्ति सौम्यताम् इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छिन्नमस्तकां सोऽपि सत्रप्रहारेण मृत्युमाप्नोति सत्वरम्। श्री छिन्नमस्ता देव्यार्पणमस्तु।